Hello everyone, welcome to Unacademy. Extremely sorry. Technical fault, not technical fault. कभी कभी कुछ टेक्निकल इश्यूज हो जाता है. आई एम लाइव. चलो. लाइव हूँ ना. चलो ठीक है. लॉगिन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, हेंस आई वाज लेट. आई एम लेट फॉर वेरी ignorable amount of time. We can ignore this obviously. Let's start quickly with my introduction. Welcome everybody. Welcome Shubham Patwari. आ जाओ छोटू. शुभम पटवारी. ओके. हमारी बात हो रही है ना टेलीग्राम पे. यस. होप यू विन सम नाइस स्कॉलरशिप टुडे. I'm an ex-time faculty, got 9+ years of teaching experience. क्या लिखा है? सर तो लॉन्ग हेयर में कितने कूल लगते हैं, पता नहीं क्यों कटवा लिया है. देवो प्रतिम चैटर्जी सीम्स लाइक, मतलब आई वॉज अ फैन ऑफ MS and then Virat came hitting centuries after centuries, तो सर became fan of him. मतलब अब बाल हटवाना पड़ेगा. क्या चल रहा है तुम्हारा? अब टीचर नो, एक टीचर को बड़े बाल रखने चाहिए क्या? आप तुम बताओ सर, बाल का टीचर से क्या रिलेशन? हम लोग अभी करेंगे लीनियर अरेंजमेंट 4 का होमवर्क क्वेश्चन था कुछ. लीनियर अरेंजमेंट 4 में होमवर्क क्वेश्चन क्या दिया था कुछ. वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ग्रुप पे पिंग करो, मैं प्रोवाइड कर दूंगा. ठीक है. नहीं यार, बड़े बाल रखने चाहिए नहीं रखने चाहिए? नहीं. हम्म, नहीं रखने चाहिए. मुझे तो बहुत पसंद है लेकिन नहीं रखने चाहिए. बहुत लोगों ने बहुत रेजिस्टेंस दिखाया यार. चलो आ जाओ. ओके चलो देखो गाइस, बी अ पार्ट ऑफ दिस टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में. फटाफट शुरू करते हैं. 14th को नया बैच है. 14th को बैच है परसेंटाइलर वीकेंड बैच फॉर कैट एंड ओमेट फॉर 2022. I am taking DILR in this batch. Quant के लिए we have 2 good faculties. VRC के लिए we have another 2 good faculties. Orientation is done by Ravi Handa sir. I can is a personalized stuff. 1:1 mentorship, डाउट सेशन, सब कुछ 1:1 हो जाता है. आपको जो भी चाहिए GDPI में असिस्टेंस. और प्लेटफॉर्म पे बेटा वी हैव एक बहुत अच्छा फीचर है दैट आई केम टू नो रिसेंटली. 25,000+ क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए फॉर ऑन आर प्लस प्लेटफॉर्म. और सेक्शनल्स, मॉक्स, बैच स्पेसिफिक टेस्ट, स्किल बिल्डर टेस्ट, GK के टेस्ट भरे पड़े हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर. आई एम लखनऊ कन्वर्टेड. कॉन्ग्रेचुलेशन लक्ष्य. वेरी नाइस बॉय. हैव अ ग्रेट फ्यूचर अहेड. गाइस हम लोग ने नोट्स ऐड किया है और दिस इज द राइट टाइम. सही बात है, दिस इज द राइट टाइम. यू हैव 6+ months in your hand. Don't take any risk. If you are preparing seriously for CAT 2022, I do strongly recommend कि आप स्ट्रक्चर्ड तरीके से प्रिपरेशन शुरू कर दो. अब ये हमारे कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने कन्वर्ट किया है. लक्ष्य, इफ यू आर हियर, इफ यू आर हियर डू रीच मी आउट पर्सनली ऑन टेलीग्राम. आपका एक टॉक करवा लेंगे हम लोग अनअकैडमी के ऊपर. स्टूडेंट्स शुड नो कि आपका जर्नी क्या था. चलो. ऑल्सो वी हैव 63 मॉड्यूल्स जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं अभी नोट्स के अंडर, जिसमें सब कुछ कवर्ड है. 1 अगस्त तक यू विल गेट द ऑल ऑफ द मॉड्यूल्स ऑफ नोट्स. ओके, दिस वाज द होमवर्क क्वेश्चन ना. कितने लोगों ने ये किया, कितने लोगों को डाउट है? दिस वॉज योर होमवर्क क्वेश्चन. टेल मी. हेलो प्रीत,
क्या क्वेश्चन है? हु सिट्स अपोजिट टू एफ? एफ के अपोजिट कौन बैठा है? एफ के अपोजिट उप्स कौन बैठा है? प्रतीक से 8 का डी, प्रतीक से बी, अंशुल से डी। प्रतीक तुम बी बोल रहे हो या डी बोल रहे हो? कितने लोगों को डाउट आ गया? चलो बहुत कम लोगों ने रिप्लाई किया है सॉल्व किया बोल के। cannot be determined, who sits opposite to f cannot be determined। कितने लोगों को डाउट आ गया? गॉट स्टक? चलो लेट्स अटेम्प्ट द क्वेश्चन क्विकली, साथ में करते आ जाओ। साथ में तो करना ही है सर, कुछ भी हो जाए। चलो कर ले साथ में। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। एट्थ का डी तो नहीं है, एट्थ का सी है करेक्ट आंसर। एट्थ का करेक्ट आंसर सी है। एट्थ का करेक्ट आंसर सी है। चलो देखो, देयर आर 8 पर्सन्स, तो सर्कल ड्रॉ करो, सर्कल ड्रॉ करो। oops 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पर्सन्स, ठीक है। they teach different subject amongst blah 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 8 सब्जेक्ट गिवन है। एंड उनका फेसिंग कैसा है? फेसिंग कैसा है? ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। चलो वेरी नाइस। लेट अस रीड आउट द फर्स्ट क्लू। ये मेरा फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, सिक्स्थ पोजीशन, सेवेंथ पोजीशन, एट्थ पोजीशन, ठीक है। ओके, बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु टीचेस बॉटनी, ठीक है। कोई पॉजिटिव क्लू है क्या? देख लेते पहले, उड़ती नजर से पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। 3 persons sit between D and the person who teaches chemistry, who is neither B nor adjacent to B. Okay. H sits 3 places away from the person who teaches. H sits 3 places away from the person who teaches botany, and he does not teach civics. The person who teaches civics is adjacent to both the persons B and one who teaches math. Okay. A sits 3 places away from the person who teaches botany. Okay. The person who teaches commerce and C are adjacent to each other. E sits opposite to the person who teaches physics. अच्छा देखो, बहुत सारे क्लूज है जहां से आप स्टार्ट कर सकते हो। जैसे इसका एक पॉसिबिलिटी, आप यहां से भी शुरू कर सकते हो, आप यहां से भी शुरू कर सकते हो। आप बॉटनी टीचर्स ये नहीं कर सकते। इसकी 2 पॉसिबिलिटीज है, सेकंड की 2 पॉसिबिलिटीज है। ओके ओके, ई सिट्स आप यहां से भी शुरू कर सकते थे। सो आप इन सब से शुरू कर सकते हो, इन सब से शुरू कर सकते हो, ठीक है। इन सब की एक ही पॉसिबिलिटी है। सो लेट्स स्टार्ट विद एनी वन ऑफ देम। ऑर्डर में ही जाते हैं। सबसे पहला क्या है? द फर्स्ट वन इज बी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु टीचेस बॉटनी। इफ आई प्लेस बॉटनी ओवर हियर, B would be at 3, second to the right. This has been taken care of. This has been taken care of. अगर मैंने बॉटनी को 1 पे प्लेस किया, B would be at 3. Yes sir. There are 3 persons who sit between D and the person who teaches chemistry. D और chemistry के बीच में there are 3 persons. So अभी के लिए अब हम ये नहीं पुट कर सकते। We cannot use the first part of the second clue. Who is neither B nor adjacent to B. So the who connects chemistry with B or adjacent to B. So chemistry is not here. Chemistry is not here. Chemistry is not here. And chemistry is not here. Am I clear with this? Yes sir, you are clear with this.
और ये पार्ट हैज बीन टेकन केयर ऑफ, सेकेंड पार्ट हैज बीन टेकन केयर ऑफ, लेकिन फर्स्ट पार्ट वी डिडंट यूज द फर्स्ट पार्ट एज ऑफ नाउ. ठीक है, दिस हैज बीन टेकन केयर ऑफ. H sits 3 places away from the person who teaches botany and he does not teach civics. H, okay. कुछ डाउट है राजा? कुछ डाउट है? Am I live? क्योंकि मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है. Am I live or not? I'm live ना? मुझे आपके चैट्स नहीं दिख रहे. ठीक है. H sits 3 places away from the person. H sits 3 places away from the person who teaches botany and he does not teach civics. Botany 1 पे है. H कहाँ होगा बेटा? Botany 1 पे है. H is 3 places away. Towards the right भी हो सकता है, towards the left भी हो सकता है. So H can be at 4, H can be at 6. H 4 पे भी हो सकता है, H 6 पे भी हो सकता है. I won't hesitate in making a second case. सेकेंड केस क्यों? क्योंकि H के लिए 2 पॉसिबिलिटी है सर. H के लिए 2 पॉसिबिलिटी है. आई वोंट हेजिटेट इन मेकिंग अ सेकेंड केस. आई विल डेफिनेटली ड्रॉ अ सेकेंड केस. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, I have botany over here. I have B over here. I don't have chemistry over here. I don't have chemistry over here. I don't have chemistry over here. Now H can either be at 6 or H can be at 4. These are my 2 cases. H sits 3 places away from the person who teaches botany and he does not teach us civics. मतलब H is not teaching civics. Civics will not be here. एंड 4 पे सिविक्स नहीं होगा. सिविक्स विल नॉट बी एट 4 एज वेल. ओके, कोई दिक्कत है क्या? नो सर, कोई दिक्कत नहीं है. आगे बढ़ जाते हैं. द पर्सन हु टीचेस सिविक्स इज एडजेसेंट टू बोथ द पर्संस. द पर्सन हु टीचेस सिविक्स इज एडजेसेंट टू बोथ द पर्संस बी एंड वन हु टीचेस मैथ. मतलब इसके एक तरफ बी होगा, दूसरे तरफ मैथ वाला होगा. ओके, and they can be in any order. मैथ्स वाला इधर हो सकता है, B could be here. मतलब civics के जो neighbors है ना, one of the neighbors is B and the other neighbor is one who teaches maths. Okay, okay, चलो अब let's check this out. Where could be civics? In first case, and this is my second case, B का नेबर होगा सिविक्स. यस और नो? फ्रॉम दिस डायग्राम इट इज क्लियर दैट B एंड सिविक्स आर सिटिंग टुगेदर. अब फर्स्ट वाले केस में कहां हो सकता है सिविक्स? सर सिविक्स ना या तो 4 पे होगा या तो 2 पे होगा. इन फर्स्ट केस civics is either at 4 or at 2. But if civics was at 2, अगर civics 2 पे होता तो civics के एक तरफ B और एक तरफ मैथ्स चाहिए. civics के राइट में B बट लेफ्ट में मैथ्स है. यस और नो? लेफ्ट में मैथ्स नहीं है. सॉरी, civics cannot be at 2. Civics cannot be at 2. In first case, B का neighbor has to be civics. So B का neighbor at 2 cannot be civics. So first वाले केस में if civics is somewhere, civics has to be at 4. If civics is anywhere, civics will have to be at 4. And one who teaches maths has to be at 5. चलो सेकेंड केस में B का नेबर है civics, cannot be at 4. It is clearly mentioned. Check this out. Civics cannot be at 4. And for the same reason, civics cannot be at 2 क्योंकि adjacent में you cannot place mathematics. There might be a confusion कि सर B को ही maths पढ़वा दो ना. But here it is clearly mentioned that both the persons, मतलब one who teaches mathematics and B are 2 different persons.
one who teaches mathematics and B are two different persons. Okay, so this case is eliminated where B teaches mathematics. Am I clear with this? So second case is technically eliminated. Second case is, this case is eliminated. This case is eliminated. Am I clear with this? Guys, clear है तो लिखो हैशटैग क्लियर, डाउट है तो लिखो हैशटैग डाउट, क्लियर है तो लिखो हैशटैग क्लियर, डाउट है तो लिखो हैशटैग डाउट. चलो नेक्स्ट, A sits 3 places away. Good evening Manish. A sits 3 places away from the person who teaches botany. ठीक है, A sits 3 places away from the person who teaches botany. Botany is at 1. A could be at 6 or A could be at 4. 6 पे you already have H. 6 पे you already have H. A has to be at 4. A has to be at 4. A is 3 places away from the person who teaches botany. Very nice. ठीक है. Okay, the person who teaches commerce and C are adjacent to each other. I don't know where is commerce, where is C. As of now, clue number 6 can be eliminated. E sits opposite to the person who teaches physics. E sits opposite to the person who teaches physics. Physics could be at 3. Physics कहाँ हो सकता है? Could be at 3. E could be at okay. Where could be physics? E sits opposite to the person who teaches physics. Physics 1 पे हो सकता है? नहीं. Physics 2 पे हो सकता है? नहीं. Opposite में E चाहिए. Physics 3 पे हो सकता है? Yes. Physics could be at 3. Physics 4 पे नहीं. Physics 5 पे नहीं. Physics 6 पे हो सकता है? Yes. फिजिक्स 2 पे भी हो सकता है, फिजिक्स 6 पे भी हो सकता है, फिजिक्स 7 पे नहीं, फिजिक्स 8 पे नहीं. ओके, फिजिक्स 7 पे नहीं. फिजिक्स कुड बी एट फिजिक्स कुड बी एट 2. नो, फिजिक्स कुड बी एट 3 और फिजिक्स कुड बी एट 8. फिजिक्स कुड बी एट 3, फिजिक्स कुड बी एट 8. C teaches neither botany nor biology. चलो ठीक है, ये भी अभी के लिए बहुत ब्रॉड है. आई डोंट नो C where C is, बट एक चीज तो क्लियर है कि C will not be here. C does not teaches botany. C will not be at 1. Okay, this is clear. C does not teaches botany. Okay. अच्छा, एक क्लू हमने ऊपर भी छोड़ रखा है ना. 3 persons sit between D and one who teaches chemistry. So D and one who teaches chemistry के बीच में you have 3 people. What does this mean? D and chemistry are opposite to each other. देखो, अगर 3 लोग बीच में है, कोई यहां पर है, 3 लोग बीच में है, तो मतलब वो ऑपोजिट में बैठेगा ना. Means D and chemistry are opposite to each other. D and chemistry are opposite. बोलो yes sir. जैसे physics and B are opposite, D and chemistry are also opposite. Agreed? चलो, वेरी नाइस. अब ये भी चेक कर लेते हैं, वेयर कुड बी D and chemistry. केमिस्ट्री के लिए चेक करो, ठीक है, किसी का भी रेफरेंस ले लो. केमिस्ट्री कैन बी एट 1. नो. केमिस्ट्री 2 पे नहीं है, 3 पे नहीं है, 4 पे नहीं है. वी हैव मेंशन्ड दिस. केमिस्ट्री कुड बी एट 5. नो. केमिस्ट्री कुड बी एट 6. Chemistry could be at 6. Yes. D could be at 2. Chemistry could be at 7. No. Chemistry could be at 8. No. For chemistry, you have only one possibility. For chemistry, you have only one possibility. H must teach chemistry. D must be at 2. ठीक है? D must be at 2. Okay. ठीक है, ये 3 और 8 मैंने गलत लिखा था ना, ये 6 यहां था, 3 और 6 था. नाउ 6 इज गॉन एज एन ऑप्शन. अब फिजिक्स एंड बी का वापस चेक कर लो. दिस हैज बीन टेकन केयर ऑफ. 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 फिजिक्स और बी के लिए वापस चेक करो. वेयर कुड बी फिजिक्स नाउ? फिजिक्स एंड ई अपोजिट टू ईच अदर. फिजिक्स एंड ई अपोजिट टू ईच अदर. ये निकाल दो यार, अभी ये सब निकाल दो. वी डोंट नीड ऑल ऑफ दीज.
physics and E are opposite to each other. Where could be physics, where could be E? ये केमिस्ट्री भी मिल चुका है, केमिस्ट्री मिल चुका है, केमिस्ट्री मिल चुका है, सिविक्स मिल चुका है, ठीक है. Where could be physics and E? Physics. Okay, एक ही possibility है ना, physics could be at, has to be at 3 and E will be here because और कोई भी pair opposite नहीं खाली है for physics and E. बोलो yes sir, yes sir. Okay, चलो. Okay. The person who teaches commerce and C are adjacent to each other. Where could be C? Where could be C? Physics at B, E at 7. Yes. Now where could be C? चलो C1 पे है नहीं, C2 पे है नहीं, C3 पे है नहीं, C4 पे है नहीं, C5 पे हो सकता है नहीं, क्योंकि C को 5 पे रखा. आपको adjacent में you have to keep commerce. C cannot be at 5, C cannot be at 6, no, C cannot be at 7, मतलब C cannot be at 7. C 8 पे हो सकता है, C has to be at 8. C has to be at 8. And commerce, where could be commerce? Commerce is adjacent to C. मतलब E को commerce होना पड़ेगा, because इधर तो botany है ना, ठीक है. Now C neither teaches botany, C nor teaches biology. C biology भी नहीं पढ़ाता है from the last statement. ठीक है, चलो. And now if C is not teaching bio, who is teaching bio? D is teaching bio, the only option left. तो C के लिए क्या ऑप्शन है मेरे पास? C के लिए क्या ऑप्शन है मेरे पास? C must teach history. C must teach history. Okay, all the clues have been taken care of. What I'm left with? I am left with G and F. I cannot decode for G or F. That's my final arrangement. So this question had two potential answers. Chalo, the first one being who sits opposite to F. F के opposite कौन बैठा है? तो देखो F के opposite तो G है ना. F अगर 5 पे है तो G 1 पे है, F 1 पे है तो G 5 पे है. दो potential answer है, दोनों में F के opposite you have G. Second, who sits second to the right of the person who teaches history? History का second to the right D है, who teaches bio, the person who teaches bio. 3 of the following 4 are alike in certain way based on the given information. Find the odd one out. The person who teaches botany and maths are opposite to each other. They are opposite. B and E are opposite. ठीक है. C and civics and C are opposite. D and bio, D teaches bio. So this guy is same. This one is the odd one out. क्लियर है तो लिखो क्लियर, डाउट है तो लिखो हैशटैग डाउट. चलो बच्चों फटाफट. क्लियर है तो लिखो हैशटैग क्लियर, डाउट है तो लिखो हैशटैग डाउट. Shall we move to the next question quickly? चलो, this one is an easy one. ये एक बार कर लो फटाफट. और this is the question where we are taking care of people in multiple facing direction. Try this एक बार and then we'll move ahead. Who sits to the immediate right of D? I'll give you 3 minutes, not more than 3 minutes. Discussion starts at 9:50. Okay, चलो.
Guys, I'll be back. I'll be back in a minute. There is something important popped up. I'll be back in couple of minutes. You guys do attempt the question, okay? I'll be back in couple of minutes. I'm back. ये B+9 UT नहीं है, ये टाइपो एरर है, इट्स बट BUT. ये +9 डैश टाइपो एरर, ह्यूमन एरर. चलो, was an easy question? Yes sir. Let's discuss this straight away. आ जाओ. Okay. This is the right answer. Okay, क्या given है that some of them are facing towards the center, some of them are facing away from center. Okay. Also, it is given कि no two adjacent person face the same direction. Okay, so अगर यहाँ पे कोई center face कर रहा है, if the person sitting at place 1 is facing the center, तो क्या हो जाएगा? The guy here will face away from center towards the center, away from center towards the center, away from center. This is clear from statement 4. Correct? Chalo. F sits second to the right of A who faces the center. This is a positive clue. We used to do the same thing when we were solving linear arrangement question. A is facing the center, so I can place A at 1. F sits second to the right of A. F would be at 3. F would be at 3. Okay, F sits second to the right of A who faces the center. Very nice. E and F face the same direction. F is facing towards the center. E must face towards the center. The only option is this. Very nice.
B sits second to the left of C, who is not adjacent to E. C is not adjacent to E. C is not here, C is not here. C has to be at 2. B sits second to the left of C. C is facing away from center. This is left of C. So B has to sit at 4. Who is the left out? D. D would be here. D would be here. Now the question says who sits immediate right of D? D का immediate right पे you have E. Answer to this question was E. बोलो yes sir. Answer to this question was E. Next, how many persons sit between B and C when counted from left of B? When counted from left of B, B और C के बीच में you have E, you have D, you have A. So there are 3 persons who are sitting between B and C when counted from left of B. 3 of the following 4 are alike in certain way. Find the odd one out. DCBF. आ जाओ. DCBF. D is facing away from center, B is facing away from center, C is facing away from center, F is facing towards the center. F is odd one out. F is odd one out. Okay. Chalo, shall we move to the next question? Try this. Try this. Try this. अब ना since we have done few linear arrangement question, हम लोग ने थोड़ा circular arrangement का भी question कर रखा है, so now I am increasing the level suddenly. This question is a good question. Definitely not easy, but definitely not difficult as well. Try this, and a time dedicated would be let me give you 8 minutes to start with. It's 9:52. Discussion starts at 10:01. Discussion at 10:01 p.m. Okay, discussion at 10:01 p.m. Oops. Mumbai 34 for 4. क्या बोलते हो मैच का? ये मैच तो अपने आप में इंटरेस्टिंग हो गया यार. Who will win? Who are you supporting today? Dhoni? Maybe his last IPL. आरसीबी तो डॉन है. आरसीबी तो डॉन है. One more down. 34 for 5. Okay. इधर ना एक विजेट होना चाहिए था स्क्रीन के ऊपर जहां स्कोर सामने हो. कौन बस सर हम लोग कर लेंगे सॉल्व. बिल्कुल कर लोगे, बस रीड इट केयरफुली. डोंट हेजिटेट इन मेकिंग केसेस. ये क्या, यू कैन सॉल्व एवरी सिंगल क्वेश्चन दैट कम्स योर वे.
It's 9:56. You guys have roughly 4 5 more minutes. Come on, boys. Who all are facing towards the center? Who all are facing away from center, Nikhil? Devopratim, same question, beta. Who all are facing towards the center? Who all are facing away from center? काफी केसेस बन रहे हैं. यस, बनाओ. Working on it. Okay. Kajal, who all are facing towards the center? Who all are facing away from center? बेटा बताना. Or Harsh, again, if you are saying it's B, who all are facing towards the center? Who all are facing away from center? If you say it's B, do tell me. Because next question है जिसमें आपको facing पता होना चाहिए. Kajal and Harsh, you guys have given a different answer other than Nikhil and Devopratim. Devopratim, आप लोग भी who all are facing towards the center, who all are facing away from center. I'm expecting the answers. You guys have 2 more minutes left. You guys have 2 more minutes left. Ho ho ho.
चलो बच्चा पार्टी। Okay. Towards the center, WPR. Okay. Away from center. Arrangement निकल गया, attraction नहीं मिला. PUTR center देवो प्रतिम. Harsh is not responding with his answer. Kajal, yours is not right, beta. The answer that I have वो मैच नहीं कर रहा है आपके साथ. I might be wrong, but chances बहुत कम है. Raja says 2 more minutes. So the time is up. अगर आपको time चाहिए तो 4 of you will have to say time. Hashtag time. I need 4 students saying they need some more time, or else we'll start discussing the question. Shubham says time. Raja को assume कर लिया मैंने, saying time. Nihal says time. Jed says time. Everybody needs time. Most of you are saying time. So okay. There are 2 arrangements coming out. उदित अग्रवाल नहीं बेटा, 2 arrangement नहीं है. देवोप्रति 1:1 wrong है. ठीक है. I'm adding some time. I'm giving you 3 more minutes. Now the discussion will start at 10:05. Now the discussion starts at 10:05. Okay, Bhavya says you have 2 more minutes, guys, and then we'll start discussing this question. Question अच्छा है. Sweetie says 14th का भी Sweetie, which 3 people according to you are facing towards the center? Which 3 people according to you are facing towards the center? Anshul 14 का C. Which 5 people according to you are facing towards the center? Sure, let's discuss this question. आ जाओ बच्चा, ठीक है? Let's discuss this question. Because of the technical glitch, we already are away. PTWQR. नहीं, Anshul, yours is wrong. चलो आ जाओ. Let's discuss this question. आ जाओ. So there are 8 persons and they sit around circular table but not necessarily in the same order. Some of them are facing towards the center, some of them are facing away from center. ये जनरल डेटा है, इसमें कोई एज एक्सेप्शनल एडिशनल डेटा नहीं है. चलो, 3 persons sit between P and U. There are 8 persons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 persons sitting between P and U, मतलब P and U are opposite to each other. बोलो yes sir.
P and U are opposite to each other. ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, डायग्राम इतना छोटा आपको समझ में आ रहा है क्या? अगर समझ में आ रहा है तो इसी पेज में सॉल्व करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट पेज मैंने एक रखा है, ठीक है? अगर इतना छोटा डायग्राम, क्योंकि 2-3 डायग्राम बनेंगे, आपको भी पता है, आपने ट्राई करा होगा, 2-3 डायग्राम बनेंगे, आपको पता है। सो इतना छोटा डायग्राम अगर आपको विजिबल है तो इसी पेज में करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट पेज में जाएंगे। बोलो। समझ रहा है क्या? यस क्या होता है देवो प्रतिम? यस मतलब क्या? यस 5 बन रहा है, हाँ तो 5 बन रहे। चलो नेक्स्ट पेज पे ही जाते हैं, फिर आ जाओ। इट्स इनफ ना, चलो इनफ बोल रहे बच्चे, इनफ बोल रहे तो इधर ही करते हैं, ठीक है? बट अगेन एक मैं एक काम करता हूँ, ठीक है? ऐसा कर लेते हैं कि इसको ना ऐसा कॉपी करके इसको पेस्ट कर लेते हैं, और ना इसमें से ना ये हटा देते हैं, ये हटा दो, ये भी हटा दो, टॉप का ये भी हटा दो, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, इसको डिलीट कर लेते हैं, एंड इसको साइज इंक्रीज कर लेते हैं वापस। चलो करते, इधर ही करते, आ जाओ, इधर ही करते हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, बट इधर कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं इधर से। आठ लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। P एंड U के बीच में 3 लोग हैं, P को यहां पुट किया, U विल बी हियर। ओके, P को नीचे पुट किया, U विल बी हियर। आई डोंट नो देयर फेसिंग, I don't know their facing, but 3% sit between P and U. It has to be this. T sits second to the right of P. अब P का फेसिंग पता नहीं है आपको, you are not aware of the facing of P. You are not aware of the facing of you are not aware of the facing of P. So T sits second to the right of P. Where could be T? T कहाँ हो सकता है? सर P could face towards the center, और T हो जाएगा 3 पे। P could face away from center, और T हो जाएगा 7 पे। ओके, सो 2 केसेस बन रहे हैं ना यहाँ पे। We have 2 cases over here, and I won't hesitate in drawing a second case. The second case would be this. I'll draw both of the cases. Now, in second case, I'll have to place T. T can be at 7, T can be at 3. Okay, T can be at 7, T can be at 3. Oh, आप लोग भी ना आगे आगे बढ़ बढ़ के सॉल्व करना, टॉपर लोगों की तरह, ठीक है? आपको अगर क्लियर होता जा रहा है तो सॉल्व करते जाना, आप लोग वेट मत करना। This is my second case. This was my first case, and this is my second case. Okay, if P is facing towards the center, T would be here. If P is facing away from center, T will be here. Okay, अगर P towards the center है, T right में, P away from center है, तो T would be at 7. This is my first case, and this is my second case. Okay, this has been taken care of. First ये भी हो गया, और ये भी हो गया। U sits 2 places away from R. I have U. U sits 2 places away from R. First case में the only possibility is R has to be at 7. Second case में R has to be at 3. Clear? Guys, you have to pay attention, ठीक है? अब चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो रही है। You have to pay attention. R and Q are not adjacent to each other. मतलब फर्स्ट वाले केस में R cannot be at 6,
और 8, सेकेंड वाले केस में सॉरी क्यू कैन नॉट बी एट 6 एंड 8, और क्यू कैन नॉट बी एट 2 एंड 4 इन सेकेंड केस। ठीक है, ओके। तो देखो बेटा, फर्स्ट वाले केस में क्यू हो कहां सकता है, क्यू 4 पे होगा या तो 2 पे होगा। एंड व्हाट वी विल डू ना, हम लोग क्या करेंगे, अगेन आई डोंट वांट टू, देखो मैं बोल रहा हूं आई डोंट वांट टू, आई डोंट वांट टू, बट बट इट इज बेटर टू ड्रॉ टू मोर केसेस। वन में क्यू के लिए यू हैव टू पॉसिबिलिटीज, क्यू कुड बी एट 2, क्यू कुड बी एट 4, सो वन का रिप्लिका वुड बी दिस, द थर्ड वन, ओके। एंड 2 में भी 2 केसेस बन रहे हैं, 1:1 आंसर नहीं है, क्या नाम है तुम्हारा, अंशुल, नहीं, ठीक है। आई डोंट वॉन्ट दिस बट आई कैनॉट हेल्प माई सेल्फ, आई डोंट वॉन्ट दिस बट आई कैनॉट हेल्प माई सेल्फ, I don't want this, but I cannot help myself. And also, I want you guys to be habituated of making cases. इसलिए intentionally also I'll make the case. Intentionally also I'll make the case. ठीक है? This is first position, second position, third position, fourth position, fifth position, sixth position, seventh position, eighth position. This is first position, second position, third position, fourth position, fifth position, sixth position, seventh position, eighth position. Okay, अभी दा फर्स्ट एंड दिस, फर्स्ट एंड थर्ड ये दोनों सेम है, तो इसको 1A बोलेंगे, इसको 1B बोलेंगे, ठीक है। और ये दोनों सेम है, P टुवर्ड्स द सेंटर, T U R, ठीक है। और इस ये ना 2 का रिप्लिका है, 2B, so P away from center, R U and T, ठीक है। नो फर्स्ट और फर्स्ट 1A और 1B में क्या डिफरेंस है, फर्स्ट A में Q को हम लोग 4 पे रख देते हैं, और इसके रिप्लिका में Q वुड बी एट 2। नो सेकेंड A और सेकेंड B में क्या फर्क है, Q कैन नॉट बी एट 2 और 4, Q को 6 पे पुट कर देते हैं और Q को 8 पे पुट कर देते हैं। गाइस, am I clear with this? Yes or no? यहां तक क्लियर है क्या? डोंट हेजिटेट इन मेकिंग केसेस, आप केसेस बनाओगे आपके लिए सॉर्टेड रहेगा। यहां तक क्लियर है बेटा? 1A और 1B, 2A and 2B, am I clear with this? यहां तक समझा तो लिखो हैशटैग समझा, डाउट हो तो लिखो हैशटैग डाउट, एंड देन विल मूव अहेड, एंड देन विल मूव अहेड। चलो वेरी नाइस, आगे बढ़ जाते हैं। और अच्छा, एक नीचे देखो, नीचे एक क्लू है, जनरल क्लू, ये पहले पढ़ लेना चाहिए था। नो 3 पर्सन सिटिंग एट कॉन्सेक्यूटिव पोजीशंस फेस द सेंटर, मतलब टुवर्ड्स द सेंटर वाले 3 एक साथ नहीं बैठेंगे, टुवर्ड्स द सेंटर वाले, टुवर्ड्स द अवे बैठ सकते हैं 3 लोग, टुवर्ड्स सॉरी अवे फ्रॉम सेंटर वाले 3 लोग बैठ सकते हैं, टुवर्ड्स द सेंटर में यू विल नॉट हैव 3 पीपल सिटिंग टुगेदर। Okay, sure sir, we'll keep this in mind, we will keep this very important constraint in our mind, we'll keep this in mind, the 9th one, we'll keep the 9th one in our mind. Chalo, the 5th one, the neighbors of T face different direction. As of now this clue is irrelevant. The neighbors of T face different direction, मतलब one of them is facing towards the center, the other one is facing away from center. एज ऑफ नाउ हम इसको नहीं यूज कर सकते ना, 5th वाले को। आगे बढ़ जाते हैं सर, अब हम 7th क्लू यूज कर सकते हैं। 7th क्या है, वी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ W हु इज नॉट एडजेसेंट टू P, वी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ W हु इज नॉट एडजेसेंट टू P, सो W वी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ W एंड इज नॉट एडजेसेंट टू P, एंड मतलब V is not adjacent to P, एंड मतलब V is not adjacent to P,
ओके। देखो यहां पे ना हम सेवेंथ यूज कर सकते हैं 1A में 1B में, सॉरी 1A में और 2A में, 1B और 2B में दो दो केसेस हो जाएंगे। सो आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं, अगर नहीं हुआ तो वापस आ जाएंगे। एट्थ यूज कर सकते हैं। T and U face the same direction as Q faces, but a different direction that R faces. Okay, तो T, U and Q, they are facing the same direction, and R is facing opposite direction. Let's check this out. T, U, Q. अच्छा, for 1A में T, U, Q are facing the same direction and all of them are sitting together. They must face away from center क्योंकि three together persons cannot face towards the center. Three together persons cannot face towards the center. Correct? And R will face towards the center then? R will face towards the center then? Yes, sir. Second one may be T, U, Q, they are together. So they must face away from center and R must face towards the center. थर्ड वाले में T, U and Q. ओके देखो थर्ड वाले में T, U, Q अगेन मस्ट फेस अवे फ्रॉम सेंटर. क्यों? क्योंकि अगर टुवर्ड्स द सेंटर किया ना तो P is already facing towards the center. Q and T if also face towards the center, then would be three persons P, Q and T, all of them sitting together and facing towards the center. We don't want this. Hence Q and T must face away from center. So U and R must face towards the center. ठीक है. 2B में Q, T, U may face towards, may face away. Q, T, U. I like 2B में there are cases possible. 2B में there are cases possible. ठीक है, चलो फिर. I'll make one more case. I will not hesitate. Sir, I will not hesitate. एक ही केस बनाना पड़ रहा है, इसके बाद क्लूज भी बहुत कम है. So I'll go with it. I'll take this chance. P facing away. ये 2B का है, 2C हो जाएगा ये. ठीक है, ये 2C हो जाएगा. R is here and U is here and T is here and Q is here. ठीक है, very nice. And this is nothing but a replica of this. ओके इस वाले में क्या है, Q, T, U को अवे फ्रॉम सेंटर कर दिया एंड R टुवर्ड्स द सेंटर कर दिया, और इस वाले में Q, T, U को टुवर्ड्स द सेंटर कर दिया, R को अवे फ्रॉम सेंटर कर दिया. बोलो यस सर. नाउ दिस हैज बीन टेकन केयर ऑफ. You have 5 cases to deal with right now. You have 5 cases to deal with. ठीक है. The neighbors of T face different direction. The neighbors of T face different directions. First वाले केस में neighbors of T face different direction. Q is facing towards the center. One who is sitting here must face towards the center. Second A में T का नेबर Q is facing away from center, जो 8 पे है must face towards the center. 1B में one who is facing away from center is Q, ये towards the center. Okay. Q is facing away from center, must face towards the center. Towards the center, away from center. Am I clear with this? कहीं कोई contradiction तो नहीं आ गया sir? Nothing as of now. ठीक है, this has been taken care of now. The neighbors of T face different directions. S sits second to the left of Q, both face same direction. S sits second to the left of Q, both face same direction. First वाला case. S sits second to the left of Q. Q is at 4. S should be at 6. Both face the same direction. S must face away from center. Second A. Or S is second to the left of Q. S has to be at 8. Both face the same direction. No, that is not the case.
eliminated. Second A is eliminated. 1B, S sits second to the left of Q. Both face the same direction is eliminated. S sits second to the left of Q is possible over here and both may face the same direction. ठीक है, इस वाले में S sits second to the left of Q, eliminated, both cannot face the same direction. So of 5 possible cases, 3 केस तो मेरे एलिमिनेट हो गए, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया और ये एलिमिनेट हो गया. बोलो यस सर. बच गया मेरा 1A. 5 वाला दोबारा बताइएगा. 5 वाले में क्या दिक्कत है ये बताओ. 5 में क्या दोबारा जानना है आपको शुभम? Got it. चलो, very nice. Self-adjusting feature is very nice feature. अब you have one more clue. अच्छा, place सब तो है ना, ठीक है. V sits second to the right of W and is not adjacent to P. V is not adjacent to P. फर्स्ट वाला केस एलिमिनेट हो गया ना, क्योंकि फर्स्ट वाले केस में V को P के बगल में बैठना ही पड़ेगा. फर्स्ट वाले केस में 2 प्लेस खाली है, 8 और 2, दोनों भी P के एडजेसेंट में है. फर्स्ट इज एलिमिनेटेड. व्हाट अबाउट दिस? W cannot be at 6, क्योंकि W को 6 पे रखा तो V सेकेंड टू द राइट ऑफ W है, V को 8 पे होना पड़ेगा. W cannot be at 6. W has to be at 4. W cannot be at 6 ना बेटा, क्यों? W को 6 पे रखा तो V is second to the right of W. V is second to the right of W. That would be place 8. वहां पे already V है, already Q है. So W cannot be at 6. W has to be at 4. V would be at 6. And V is second to the right of W. मतलब W must face towards the center. W must face towards the center. Am I clear with this? Am I clear with this? Yes, sir, you are. Yes, sir, you are. So that's the solution. ये हमारा प्यारा सा solution है. बहुत अच्छा लगा सॉल्व करके इस क्वेश्चन को. I do strongly recommend you guys कि एक बार आप वापस सॉल्व करना. अब कितने लोगों को समझा लिखो हैशटैग समझा, कितने लोगों को डाउट लिखो हैशटैग डाउट. जितने लोगों को समझा लिखो हैशटैग समझा, जितने लोगों को डाउट लिखो हैशटैग डाउट. I do very strongly recommend. QPS facing the same direction. हाँ, QPS are facing the same direction, but towards the center है VWR. And now you can answer any question. You can answer any question. मैं recommend करूंगा एक बार वापस solve करना ये सर, ठीक है? हाँ, एक बार करना ही पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल. और लास्ट पार्ट निहाल, कौन सा पार्ट छोटू? Which part exactly? Which part exactly? लास्ट पार्ट में स्पेसिफिकली कौन सा? ये कैट लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल. Why V at 6? ओके, चलो, लेट मी डिस्कस दैट. हम उस वहां पर थे, ऐसा चल रहा था कुछ, ठीक है? ये सिनारियो था, ओके. एंड ये एक क्लू बचा था हमारे पास, ओके. अब देखो, एट वन ऑफ द प्लेसेस आपके पास W होगा और एक प्लेस पे V होगा, ओके. अगर बेटा अगर आपने W को 6 पे रखा, सोचो, अगर आपने W को 6 पे रखा तो V सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ W है. W को 6 पे रखा, 6 पे जो भी है इज फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, तो V को यहां होना पड़ेगा ना. देखो, V को यहां होना पड़ेगा. दैट इज सेकंड टू द राइट ऑफ 6. दिस पोजीशन इज सेकंड टू द राइट ऑफ 6. यहां पे ऑलरेडी Q है, indicates W cannot be at 6. Indicates W cannot be at 6. Now if W is not at 6, W would be at 4. And when W is at 4, V has to be at 6, the only left option. And V is now second to the right. ये तभी possible है when W is facing towards the center.
Got it? So very nice. So guys, we'll stop here for the day. And now you could answer any of the question. इसका आंसर था 3/5. इसका आंसर था 3/5. ठीक है, इसका आंसर था 3/5. Okay. Tomorrow we'll meet again at 9 p.m. एंड कल कुछ थीटा काइंड ऑफ क्वेश्चन देखेंगे सर्कुलर में. ओके, tomorrow we'll meet at 9 p.m. and we'll check some theta kind of question. There is no class on 14th. 14th ko we won't be having any class. No class on 14th. No class on 14th. ठीक है? Because I'm going to watch the match. I'm going to watch the last match between KKR and Hyderabad. I already mentioned. ठीक है? Again, एक और छोटा सा information. Okay, let me do this. सर एक सेंटेंस है, समझा दो. बोलो राजा, बोलो क्या सेंटेंस है? नो क्लास ऑन 14th. द फर्स्ट थिंग इज नो क्लास ऑन 14th. सेकेंड, ओमेट्स के लिए आई एम स्टार्टिंग DILR. आपको 1-2 दिन में टाइमिंग्स और वगैरह पता चल जाएंगे. ठीक है. एंड थर्ड थिंग इज कि स्पेशल क्लासेस पे जो टॉपिक्स हम लोग यहाँ फिनिश कर रहे हैं उनका प्रैक्टिस हम लोग करते रहेंगे. सो डू फॉलो मी ऑन स्पेशल क्लासेस एज वेल. S is neither from A nor from the same college U is from. Suppose U है IIM A से. ठीक है. So S is neither from A nor from the same college U is from. So S ना अच्छा चलो ठीक है. U is from some college. Let me say college B. There are 3 colleges A, B and C. ठीक है. There are 3 colleges A, B and C and U is from B. S is not from A and S is not from college B as well क्योंकि U B से है. So S is from C. 14th को सनराइजर्स हैदराबाद है और KKR है ना. RCB को किससे खतरा है? हैदराबाद से खतरा है. आई एम सपोर्टिंग KKR दैट डे. S is not from college A and U जिस कॉलेज से है. चलो, एम आई क्लियर विद दिस? स्पेशल क्लासेस का नोटिफिकेशन भी मैं यहां पे दे दूंगा आपको और ग्रुप में दे दूंगा मेरे. Who was this? राजा, क्लियर है अभी आपको? ये क्लियर है छोटू? चलो बेटा, so we'll stop here for the day. If you guys wish to connect with me for any reason, strategy discussion, self study कर रहे हो तो भी, कुछ भी अगर डिस्कस करना है टेलीग्राम के थ्रू, यू कैन रीच मी और पर्सनली. पंकज, फुल फ्लेजेड तो हम लोग प्लस पे प्रोवाइड कराते हैं, बट यू कैन फॉलो माय फ्यूचर क्लासेस फॉर प्रैक्टिस. ओके, फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस, प्रैक्टिस, रिवीजन वगैरह तो प्लस पे होता है बेटा. ठीक है. If you guys wish to speak with me, do reach me out on Telegram. Have a great day ahead for today. Signing off.